वेरी वेरी Hello. सबसे पहले तो Hello. 19,000 तो क्रॉस करे फिर देखते हैं, बट 19,000 looks very much likely. I think हमारे जो guests हैं आज बहुत ही they are full of zeal because the markets are higher. So hello and welcome. आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनके पास से सीधा चलते हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं मिस्टर विनीत बोलिंजकर, हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज से, एंड मिस वैशाली पारेख, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च प्रभुदास लीलाधर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक मित्तल, रिसर्च हेड जागरण बिजनेस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विवेक के पास सीधा चलते हैं। विवेक, फेड पॉलिसी मीट्स का आउटकम आ चुका है, बाजारों ने उसको भुना दिया है और हमारे बाजार तो ऊपर है फिलहाल। क्या लगता है आपको? गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू मैम। अगर हम देखें तो कल फेड की पॉलिसी में जो मार्केट सुनना चाहता था एग्जैक्टली मिस्टर पॉवेल ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन हाँ काफी कुछ जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी उन पर उनकी पॉलिसी थी। 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक था और कंसेक्यूटिव 10th रेट हाइक था ये। और अगर हम देखें तो 16 साल के हाईज पर इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। जो वो पॉज उन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि ये पॉज आने वाले समय में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा या नहीं, इसको लेकर थोड़ा अमेरिकन मार्केट्स में एक डर था, जिसकी वजह से हमने कल वहां पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। साथ ही अगर देखें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट रेट में अभी कटौती नहीं दिखती है नियर फ्यूचर में। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था उनकी साइड से। साथ ही ईसीबी को लेकर भी, ईसीबी की भी आज मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, उस पर भी मार्केट की नजर रहेगी। कल क्रूड ऑयल में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स में जो स्ट्रेंथ है वो एफआईज की लगातार खरीदारी है। डेली बेसिस पर 1500 से 2000 करोड़ 2500 करोड़ इस तरह की बाइंग उनकी देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल मार्केट पर देख रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून विनीत सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विनीत सर, आपसे पहला सवाल होगा। आप वैशाली मैम से पूछ रहे थे कि आपको मार्केट कहाँ लगता है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली आपको मार्केट कहाँ लगता है सर? बिकॉज अर्निंग सीजन जो है वो चल रहा है और नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, कुछ आईटी को छोड़ के। बट you speak about autos, you speak about metals, you speak about banks, नतीजे जो काफी अच्छे हैं। तो फंडामेंटल साइड पे आपको मार्केट कैसा लगा? So मेरा थोड़ा आंसर will be slightly big, so please bear with me. If we have to take a view of the global markets, और ये मदर मार्केट यूएस की जो है उसमें काफी हमने देखा 2 दिन से करेक्शन आई है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑल टाइम लो अक्टूबर में 3500 के आसपास हुआ था, and today we are trading near 4,100 K below on the S&P. So we are trading at the higher end of the entire correction that was happening. तो हमें लगता है कि and we have seen all the banks collapse in the US, the mid and the small size banks. So हमें लगता है कि there is going to be flight of capital from the bad banks to the large banks. और एक बार ये flight of capital deposits rather वो जब हो जाएंगी, तभी it will be very easy for the US to introduce a central bank digital currency, which will come in line with the BRICS का digital currency which is proposed in the month of August. अभी हम देखेंगे कि these events are futuristic but they are not very far away. Okay? हो सकता है कि American CBDC may come a year later, but उसकी अभी preparation चल रही है. This is my analysis. And जिस तरह से market trade कर रहा है, हमें लगता है कि it is discounting all the negative news. So आप देखिए IBM ने job losses discount कर दिए, banks की recession आ गई। अभी आप देखेंगे US में जो 4000 banks है, ये सब community banks है, localized banks है। तो ये banks के job losses भी हो सकते हैं because of lesser credit activity, credit lend वगैरह। तो in spite of that, market is trading pretty firm. तो हमें लगता है कि the worst has been discounted. And अभी जो interest rate pause लिया है, what we can make out from this stalling of economic activity plus जो high base effect of last year of inflation, हमें लगता है कि trajectory of interest rates will be down. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि interest rates will go back to zero because those were absolutely exceptional times. So interest rates यहाँ से कम हो जाएंगे, but they will not come down significantly. और इसके चलते हुए हमें लगता है कि there will be a decoupling of the Western world with the emerging world. So we will see that money will move from the Western world to the Eastern world. And if you see
India and China are expected to contribute almost 50% of the global GDP for the coming year. Right. उसका अनुमान हमें इंडियन मार्केट्स में भी दिख रहा है. आईटी स्टॉक जैसे हमने पिछली बार बात किए थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. आप देखेंगे तो दे हैव नॉट गॉन एनीवेयर. Only Wipro is up and select mid cap IT is up, but more or less they are trending steady because the market sentiment is good. And I will continue to advise investors to get out of IT stocks, move into domestic themes, क्योंकि इतनी strong growth इंडिया में आने वाले कि आप अनुमान नहीं लगा सकते. अगर if we have got 70 crore people under the age of 25, आपके पास एक 25 year का कंजम्पशन स्पेस है इंडिया में जो 5000 साल की ह्यूमैनिटी में हमने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया. So this is the kind of growth that is going to come. Rupee is becoming strong. Rupee is going to come in 72 countries. UPI has become global. So India will obviously become a reserve currency in a matter of time, say 2 years. दूसरी चीज क्या है, चाइना की करेंसी भी will become a trade currency but not a reserve currency. So ये सब देखते हुए हमें लगता है definitely India will do well. If we come to the Indian market valuations, अगर आप देखेंगे कि Nifty 50 stocks are trading at about 16.5 times, small cap is trading at 13.5 times. तो हमें लगता है कि ये जो दो पैक ऑफ स्टॉक्स है इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज है विद पोटेंशियल टू रिवर्ट बैक टू द मीन. जनरली अपना मार्केट 17 टाइम्स ट्रेड करता है. अगर आप रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स देखेंगे, निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी जिसको बोलते हैं, which is the next Nifty 50 stocks, आप Nifty 200 small cap mid cap देखेंगे तो they are all very expensive. In fact, next Nifty 50 is trading at 22 times. So FY24 earnings, we are talking 2 years out, calendar earnings FY24. So हमें लगता है कि Nifty and small cap are the areas to invest in. And that is why we believe that there is a little bit of everything, not only for the retail investor, but also for those buying mutual funds who invest in institutional stocks. So Vinit sir is full of optimism and he sees the markets going high from here. And he has also advised the retail investors to really get into mutual funds, can get into stocks directly. पर थोड़ा निवेश जो है वो शुरू करिएगा क्योंकि विनीत सर तो बिल्कुल सेट है कि इंडिया इज गोइंग टू शाइन. वैशाली 18,200 फॉर निफ्टी, इट टच्ड बट इट केम बैक, उसके नीचे कामकाज कर रहा है. अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ देखते हैं आप निफ्टी का? Very good afternoon to everyone. Actually, देखे तो निफ्टी ने अच्छा सा रन अप दिया है, right from 17,200 in the recent low and 18,200 is a technical resistance. So यहाँ से हम फिलहाल बोल सकते हैं that yes, market is taking a breather. We are fine as long as 18,000 levels are held on. ज़्यादा से ज़्यादा 17,800, but the trend looks very positive. So if we maintain 18,000 levels and if we move past 18,180, 18,200 levels decisively, then we have an open target of 18,400. So इसी अनुसार I think right now market थोड़ा consolidation कर रहा है. I'm not seeing any selling pressure coming in. So wait and watch. Let's see decisive levels में कहाँ reach होता है. गुड आफ्टरनून विनीत सर. विनीत सर, अगर देखें तो इस वीक में बहुत सारे ग्रुप्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं और अदानी के खास तौर से अगर मैं बात करूं, अदानी विलमार्ट के कल रिजल्ट्स आए थे, थोड़े वीकर साइड पर थे. अदानी टोटल गैस के रिजल्ट्स आए थे, वो भी उतने एनकरेजिंग नहीं थे. अंबुजा के रिजल्ट्स ठीक थे. सर कैसे देख रहे हैं ओवरऑल अदानी ग्रुप को? थोड़ा सा शॉर्ट में बात करूंगा. आई थिंक दैट अडानी पोर्ट्स and Adani Total Gas are deep value stocks जो अगर आप इस levels पे निवेश करोगे तो आप पैसा 100% नहीं खोगे. So that is what we feel. Adani Total जो है it is net debt to EBITDA is 1 time. Adani Ports is the best play on the Indian economy. Dividend yield strong है. तो हमें लगता है ये दो stocks में 100% निवेश कर सकते हो. जहां तक बाकी के Adani infrastructure stocks है, Adani Enterprises, अडानी ग्रीन एंड अडानी ट्रांसमिशन, इनको ग्रोथ कैपिटल की बहुत सख्त जरूरत है. तो विदाउट ग्रोथ कैपिटल आपको अपसाइड नहीं मिलेगा. सो अभी फिलहाल जो इनका एबिटा
conversion हो रहा है, that is going to repay debt and consolidate balance sheet. And SEBI has asked for a 6-month extension to submit its report. So this is a good time for the Adanis to consolidate, reduce gearing, and once the SEBI report is out, investors can step in and look at these stocks. So that is, I think, how to play this group of stocks. गुड आफ्टरनून वैशाली मैम। वैशाली मैम, अगर देखें तो 3 दिन से टायर स्टॉक्स में एक अच्छा रन अप देखने के लिए मिल रहा है। C8 एमआरएफ के कल हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे थे। काउंटर में रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सारे ही टायर स्टॉक्स में एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग देखने के लिए मिल रही थी। इज द राइट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स और अभी कुछ मोमेंटम बचता है इनमें? I would say मार्केट काफी एक अपवर्ड मूव दे चुका है। So I would say स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें so I think Apollo Tyres, MRF में काफी रन अप आया है, but that does not mean that profit booking आ सकता है, but all the same trailing stop loss रखना चाहिए। But I'm also looking at Balkrishna, TVS, Sri Chakra, ये सब में काफी upward move है। टेक्निकल अगर देखें तो Balkrishna has just started, तो अपसाइड पोटेंशियल काफी है। So I think स्टॉक स्पेसिफिक एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। Vinit sir, gold prices at all-time high और टाइटन के नतीजे काफी अच्छे रहे और उनका जो आउटलुक है वो भी काफी अच्छा है। Many of the broking houses have increased the target for Titan. आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? नहीं, definitely very positive. Titan has a 5% market share. Market is very very big. इसमें तो organized sector की अभी तक चहल पहल ही नहीं है। So, and there are very few players who have got the integrity of Titan. Second thing, you will see once the ये जो economic collapse globally हो रहा है, उसमें gold is going to play a very very important role because gold will become the one of the store of value, right? तो उसके पीछे gold की इतनी demand आएगी not only from the nations themselves but also from individuals. If there is a crisis of confidence created by the dollar, gold is the best investment. So it should definitely be there in your portfolio. I would recommend having at least a 10% exposure to this asset class. And अगर आप एक long term हिसाब से देखेंगे तो no asset class has beaten the returns at gold as offered. So होना ही चाहिए, आपको खोने का कुछ नहीं है, best defensive hedge है. So I think a very good asset class to it. वैशाली मैम, 2 स्टॉक्स है, इंडिगो एंड हेवल्स, दोनों में ही काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले और इंडिगो को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। इट्स ओनली लिस्टेड कंपनी, स्पाइस जेट का तो आपको पता ही है, इट्स इन फाइनेंशियल ट्रबल, लिस्टेड बट द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग। सो इंडिगो एंड हेवल्स ऑन द चार्ट्स। So I would prefer Havels because technically well placed. अभी तक इतना movement आया नहीं है। So 1200 के support के साथ I think this stock can run up towards 1300, 1350. Whereas Indigo is concerned, Indigo में already एक run up आ चुका है. And I would say that these stocks are very high beta and quite volatile. So I would say that yes, Indigo में upward move हो चुका है, but it would be a buy in decline recommendation. हालांकि ऊपर आगे targets 2400 are not impossible. वैशाली मैम, 2 काउंटर ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड काउंटर है, इनमें अभी ब्रेकआउट है, स्टरलाइट टेक और HFCL में मॉर्निंग से स्ट्रेंथ थी लेकिन स्टरलाइट टेक में अभी स्ट्रेंथ आते हुए देख रहे हैं, इन पर आपका व्यू? So Sterlite Tech is very well placed, I think, and this is one of the very good stocks. So I think this is buy in every decline. Even for a long-term perspective, this should give very good return. So I think ये stock positive view है. And HFCL की आप बात कर रहे थे. Yes, we saw momentum, but I would prefer Sterlite. विनीत सर, इस समय ग्रोथ स्टॉक्स को चुनना चाहिए वैल्यू स्टॉक्स को? मार्केट की इतनी पिटाई हो गई थी ना लास्ट 6 months अगस्त से कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे वैल्यू भी है और ग्रोथ भी है। सो आई थिंक यू शुड बी लुकिंग फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे जहां पे काफी स्टॉक वैल्यूएशन डिप हो चुकी है, इट इज एट ईयरली और 2 year लोस और ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तो आई थिंक दोज आर द काइंड ऑफ स्क्रीनर्स दैट
individuals or investors should run and then invest in those stocks. जैसे कि आपने कहा कि ग्रोथ और वैल्यू को मिक्स करके स्टॉक्स को देखना चाहिए, विनीत सर, आपकी लिस्ट पे ऐसे कौन से शेयर हैं? So, we had recently initiated on a company called Artemis. We had discussed it in one of our shows also. The stock was at 66. Today it is running around 80 rupees. It is a hospital in the NCR region. काफी undervalued है. इनके one of the top notch ARPUs है. और इनकी expansion strategy बहुत अच्छी है. तो ये लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज आत्मनिर्भर अपना जो आयुष्मान भारत के नजरे रखते हुए उन्होंने एक्सपेंशन की है. दे कमिंग आउट विद सैटेलाइट सेंटर्स व्हिच आर हाई मार्जिन. और हम लोग ने इसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ न्यू मॉडल हमने मार्जिन ज्यादा कंसिडर किए. सो हमें लगता है कि ये अगर इनकी बिजनेस मॉडल फायर होंगी तो दिस स्टॉक कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर. वैशाली मैम, those stocks, BHEL and IDFC first. Yes, so long term, because BHEL we have seen good run up. थोड़ा profit booking आ रहा है, but I think long term charts देखे तो one cannot rule out the possibility because defense is a very major play. So I think BHEL on a broad base 76 का एक अच्छा सा support है. So buying decline, but I think projected target comes to 100 levels. And IDFC first bank आप पूछ रहे हैं मुझे? So 54. So from a long-term perspective, 54 has played as a very major support, and 64, 65 के ऊपर एक breakout आ रहा है. So further to that, अगर एक sustain करता है ये breakout level के ऊपर, I would look at a target of 70, 72 for now. नहीं सर, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट हमने देख लिए हैं और अब तो जिस भी कंपनी के पीछे बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा हुआ है उसमें एक अच्छा रनअप हम देख चुके हैं सर. सर कोई ऐसा सेक्टर जो कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो लेकिन काउंटर्स ने उतना मूव नहीं दिया? I think we should look at infrastructure plays. Those who are into building construction, those who are into the infrastructure sector. So those stocks can be on the radar. सर उसमें कोई पर्टिकुलर लिस्ट आपकी? आलूवालिया कंस्ट्रक्शंस है. You can look at capacity. Capacity का order book 5 times annual sales है. So these are some of the stocks that we think can offer interesting investment opportunities. जी. वैशाली मैम, रेलवे स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है. RVNL और टीटागढ़, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. कोई पर्टिकुलर काउंटर है जिसमें अभी ऐसा लगता है कि मोमेंटम अच्छा खासा बचा हुआ है? रेलटेल पे जरूर ध्यान दीजिए. रेलटेल इज इन अ ट्रेंडिंग ऑलरेडी एंड आई थिंक 115 का एक अच्छा सा सपोर्ट है. सो वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिकॉज अगर पोजिशनल टारगेट्स देखें तो 150 160 के टारगेट्स दिख रहे हैं. सो रेलटेल इज वन ऑफ देम वेयर बाय आई फील के काफी अपसाइड पोटेंशियल है. Vinit sir, crude oil prices are falling. I mean, we have seen a sharp decline in crude oil prices. इसका impact positively on paint companies पड़ता है. Asian Paints थोड़ा बहुत momentum वापस लौटा है. Berger Paints वगैरह भी थोड़ा बहुत traction देख रहे हैं. Anything you like in the paint sector? So I like Kansai Paints, although people are not very optimistic on them. My simple thesis is that they're doing reasonable work on expanding the decorative segment. And if you talk of the industrial side, India में इतना capex हो रहा है, and the automobile sector is doing well. So Kansai has a very decent market share out here. So keeping that in mind, I think Kansai looks very good. Other thing we like is I'm forgetting the company's name, Dulux Paints, which is there. Okay. So I like that stock. वो अच्छा है. Asian Paints, definitely they got a diversified business model now. So these three stocks are worthy investment candidates in the paint sector. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के काफी अच्छे नतीजे आए हैं. वो हम विवेक से बाद में पूछ लेंगे. पर चार्ट्स पे आपको क्या लगता है? इट्स अ सर्च ऑफ अराउंड 9% टुडे. Chola Finance. Chola Finance already overbought, already done with the result. Also, I think let's wait for a decline. Okay. Yes, Vivek.
विनीत सर, अगर देखें तो एफएमसीजी में अभी तक लग रहा था कि सर रूरल प्ले थोड़ा सा इस बार खराब होने वाला है, क्योंकि मॉनसून का थोड़ा डिस्टरबेंस था। अभी ये जो नॉर्दर्न पार्ट में और पूरे इंडिया में इस तरह का टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है, उससे भी कुछ क्या वॉल्यूम पर कुछ इम्पैक्ट आने वाले के सर? See, I am a slightly contrarian में थोड़ा macro देखता हूँ, and in the Q4 we have seen very strong recovery. Rural spending is up 17-18%, and in spite of everything, now I believe that even if we have a bad year in terms of monsoon, the water table levels government के efforts जो है, they have been pretty optimistic. So थोड़ा सा dip हो सकता है, but I think ये सब sectors में invest करना चाहिए, क्योंकि इधर से downside limited है. The reason I will tell you is that companies will take price hikes, to sustain their bottom line targets if the volume growth does not come in. So, and they will take other cost cutting initiatives which will support their bottom line. So, keeping this in mind, I think they may not outperform or they may underperform in the short run. But if you have just a vestige of a good monsoon, then the rally will not come in your, you will not be able to catch the rally. So हमें लगता है कि इसमें gradually buying करना चाहिए, buying on dips kind of strategy. Identify your best stocks, buy on dips, and wait it out. वैशाली मैम, दो काउंटर ग्रेफाइट से जुड़े हुए, ग्रेफाइट इंडिया एंड HEG, इन दोनों काउंटर्स में एक अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, कुछ लगता है? Technically speaking, of course, graphite was a very very attractive counter because 290 के ऊपर एक breakout आ रहा था, and for वहां से चल चुका है, but I still maintain a positive bias. I think the stock can go around 360 levels to start with. वहां से we can have a relook. और उसी अनुसार HEG also gave a breakout simultaneously, and I think near-term targets can come to 1250. Vaishali, what do you like in metal space? Metal space पे क्या पसंद है? So my favorite pick is Jindal Steel and Power and JSW Steel. And अब देखेंगे तो Jindal Steel and Power already has got into momentum because of all the metal pack. These are the fast moving stocks. So Jindal Steel and Power, my trading target फिलहाल आ रहा है 620, and JSW Steel I'm looking at 765. But I'm also looking at SAIL and NALCO. So स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हिंडाल्को ने भी ब्रेकआउट दे दिया है 445 के ऊपर जो सस्टेन करता है. आई एम लुकिंग एट द नेक्स्ट टारगेट ऑफ, मैं अभी लंबे समय का नजरिया बोलूंगी, 520. एंड सेल अगर आप बात करें तो 83 टेक्निकल लेवल्स, वेरी वेरी सेफ बेट, वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और 83 से चल चुका है. आई वुड लुक एट अ टारगेट ऑफ 92. सो ओवरऑल आई लाइक ऑल दीज स्टॉक्स. विनीत सर, एफएमसीजी स्पेस में HUL के नतीजे आए, डाबर के नतीजे आज है, क्या लगता है आपको? As I told you, HUL के results थोड़े से मार्केट में इतना मिक्स रिएक्शन है, लेकिन हमें लगता है, as I told you, that the companies can have substantial levers to manage their net earnings. तो हमें लगता है कि they will have substantial cost levers to cut cost, push up prices, and ये inflationary environment था, अभी inflation भी slow down हो रहा है internationally, so they will not drop prices. So I think that the margin growth will be sustained, and hence with a slight lag one can look to buy into HUL. Dabur में थोड़ा सा अभी भी issues है. I would prefer to buy Godrej Consumers. Marico is another good stock to look at. So I will go with these two stocks. विनीत सर, कल रशिया ने आरोप लगाया कि यूक्रेन वालों ने उन पर ड्रोन से हमला किया और उनके जो क्रेमलिन, जहां पर जो उनका ऑफिशियली, जहां पर प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहां पर अटैक हुआ. हालांकि मिस्टर पुतिन को कोई नुकसान नहीं हुआ हेल्थ वाइज. तो क्या ये माना जा सकता है कि रशिया कुछ काउंटर अटैक एग्रेसिव करना चाहता है यूक्रेन पर? नहीं, डेफिनेटली. मतलब आप देखोगे इंडिया में भी जब भी कुछ मिलिट्रीली अटैक होता है तो देयर इज ऑलवेज
the talk of a response. जैसे बालाकोट हुआ या पुलवामा हुआ, India has always responded with surgical strikes, right? So we expect Russia also to react. And when you're attacking the Russian president, now it does not matter whether Ukraine did it, US did it, UK did it, or any other European country did it. The Russians will strike back with vengeance, and they will strike in the least possible, with the most vulnerable outcome. Where the vulnerability is the highest. And अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी weeks में Russian submarines have been patrolling all the sensitive installations, like the pipeline which connects across the continent, or they're targeting the internet cables, cable network which connects the transatlantic. So ये सब critical installations जो already fragile economic setup है, उसको attack करने की possibility है, and this is one of the very big risks to our bull thesis. जी सर, कोई स्टॉक जो आप देख रहे हो डिफेंस में कि इंडियन डिफेंस कंपनीज को भी काफी कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये कंपनीज अब बाहर, अभी मैं पढ़ रहा था किसी पर्टिकुलर कंट्री को इन्होंने कुछ शायद सबमरीन या कुछ शिप वगैरह बनाकर दिए हैं इंडिया ने, तो सर कुछ कंपनीज के लिए ऑर्डर्स हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं? See, I think HAL is a very strong stock. BDL, Garden Shipyard, these are three of my favorite stocks in the defense space. If you come to the private industries in the defense sector, data patterns, frankly speaking, I miss the bus, and हमें बहुत दिक्कत होती है जब stock price बढ़ जाता है. But we are looking at another very interesting story that one can look at is Lokesh Machines. So ये जो Lokesh Machines company, it's not a recommendation to buy. People can do their own research. But ये जो Lokesh Machines stock है, they have applied to the Indian government for their pistol. तो अगर इनकी pistol approve हो जाती है, तो their clientele can become all the state police forces. And then this can become a very big market for this company. So it's a 300 crore top line company with good skills in engineering capabilities. और इसको study करके, research करके इसको track करना चाहिए. Again, it is not a recommendation to buy or to sell the stock. It's purely a stock which is which, if it gets orders, can do very well. वैशाली मैम, आपकी कोई टॉपिक्स? Well, फिलहाल मैं recommend कर रही हूँ. I think I really like Asian Paints for now. Asian Paints ने मुझे, I think it has got into new round of momentum. तो मेरी ये trading strategy रहेगी. And I'm looking at अभी जो 2900 के levels पे चल रहा है, I'm looking at a target of 3200. और दूसरा मुझे फिलहाल आज लग रहा है that OMCs are also doing very well. So I would look at IOC. IOC is on the verge of a breakout. So 84 levels पे चल रहा है, and I would look at a target of 95-96. So 80 के stop loss के साथ 95-96 IOC. These are my two trading bets. वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच विनीत सर फॉर बीइंग विद अस. विवेक, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.